Assalamu alaikum, grade 10. How are you? I hope all of you are fine, healthy and safe. I hope all of you are going to your school regularly, attending your classes, and I wish and I pray that you are concerned about the way you behave with others. We must be kind and gentle towards all the living beings on the face of the earth. Faiza Nadeem here with your English lesson. And what we are going to do today, I'm going to tell you within a second. So let's start today's lesson. Ji beta, what is the board telling you? And not to forget my bitiya as well. So beta and bitiya, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the writing skills of the poem, which is unit 5 of your textbook, The Rain. This poem is written by W.H. Davies, and we are going to do all the topics that fall in under the heading of writing skills, right? So first of all, what is the first writing skill of the poem? The first writing skill of the poem says that you have to write the main theme or the main idea of the poem, The Rain. Whenever you will be writing or explaining the poem, you have been expected to write the reference first. It's mandatory for you to write the reference first. And what does the reference of the poem, The Rain, say? It says that this poem, The Rain, is written by W.H. Davies. ठीक है, ये लाइन आपने रोट लर्न कर लेनी है, पक्का रोट लर्न कर लेनी है. ये लाइन जब आप रोट लर्न कर लोगे तो द रेन के सिलसिले का कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्रिएटिव राइटिंग का, क्वेश्चन आंसर्स का, कहीं से भी आप इस लाइन को पक्का उधर ठोक दो. 0.5 पक्के आपके इस स्पेसिफिक लाइन के. ठीक है, अब जब आपसे मेन आइडिया की बात की जा रही है तो आपने उसके ऊपर पेजेस के पेजेस नहीं भरने, ठीक है, और वर्ड्स के वर्ड्स नहीं लिखने. मेन आइडिया इज सपोज टू बी शॉर्ट, स्पिक एंड स्पैन. ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट सा मेन आइडिया होगा जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट मेन बात कर रहा होगा. आपने इधर उधर बुशिंग अराउंड नहीं करना when you are writing the main idea. You will say that this poem, The Rain, is written by W.H. Davies and it is a symbolic poem. In this poem, leaves are symbolized or leaves are metaphorized with the upper class and the lower class of the society. The leaves on the upper branches of the tree are considered to be the upper class status people of the society, and the leaves on the lower branches of the tree are considered to be the lower class members of the society. And furthermore, the sunshine described in this poem symbolizes the day when the darkness of the poverty will come to an end. This sunshine reflects the time when the blessings of Allah Almighty will fall upon all, regardless of their social status, whether they are rich or they are poor, and there will be a fair distribution of the blessings of the nature. Currently, what has happened? The rich are getting richer and the poor are getting the poorer. The luxuries, the advantages, the benefits of life are being given to the rich first, and then they are filtered out towards the poor. So this is what this poet symbolizes in this poem, that one day all this inequality that is prevailing in the society will end up. And one day, each and every single individual will be treated equally. Nobody would be considered as superior and nobody as inferior. I've given you the main idea. Question number A of the writing skills of the poem The Rain. ठीक है, अब we'll move on to the second part. Second part में उन्होंने आपसे कहा कि paraphrase करें stanza 1 की और stanza 2 की. Stanza 1 is written on here, half of it, and
a little bit further, the rest of the stanza has been written. अगर आपको याद हो तो मेरा द रेन का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने सारी पैराफ्रेजिंग आपको कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ दोबारा करूँगी ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए, पक्की हो जाए, आपको फिर प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता है जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि जो भी याद कर रहे हो उसको बोलो, रिकॉर्ड करो और दोबारा सुन लो, आपको पक्का याद हो जाता है। आपके ज़माने में तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, सुनते रहोगे याद हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कमाल दिया हुआ है ना। तो I'll start reading the stanza 1. After I have finished stanza 1, I'll do the paraphrasing. ठीक है? I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on the top, giving the poor beneath drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. अब आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि जब भी आप इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे आपने सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। अभी मैंने आपको याद कराया था रेफरेंस, क्या कहा था मैंने आपको? 0.5 मार्क्स का एक स्टेटमेंट बताई थी। दिस पोम द रेन इज रिटन बाय W.H. Davies and this is a symbolic poem in which the poet symbolizes the leaves on the upper branches of the tree as being the rich class of the society and the leaves on the lowermost branch of the tree as the poor class of the society. ठीक है, अभी मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप इसमें ये कहेंगे, जब आप पैराफ्रेज करेंगे तो आप ये कहेंगे कि I hear the poet is enjoying the natural scene of rainwater dropping on the leaves, and the sound of rainwater which is dropping on the leaf resembles the sound of gulping water. So here the poet has used a metaphor to similarize, ठीक है, make the two act feel similar, that the leaves were drinking water the way we drink water. And now in the second line the poet has basically symbolizes the rich ones as the rich class of the society because they are the ones who are getting the best of everything. The branches on the top of the tree carrying the leaves are the ones who are the rich people of the society because they are getting the direct rainfall and they are drinking the first hand water. So they are getting the benefits that one can get as far as the class status or symbol is concerned. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि in the next line the poet says that the branches on the uppermost part of the tree first enjoy the first hand luxuries of life. This is what he is symbolizing. And then the poor leaves who are on the ground floor, the poor leaves who are on the downwards branches of the tree, they are getting the raindrop drop by drop. They are getting water drop by drop. And thus they are the poorer people who get the filtered or used things in the world. This is what the poet has symbolizes till here. In the next line, he says that it's a sweet noise to hear. Yani the poet now enjoys this rainy weather, this rainy season, and he says that it was such a sweet noise to hear the pitter-patter of the raindrops on the leaves of the trees. And since he is sitting near a place where he can hear the noise of the raindrops falling on the leaves, he is enjoying and cherishing every moment of it. This is the paraphrasing of stanza 1. Let me read out the stanza 2 and I'll paraphrase again for you. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. Okay, over here, the poet has again used metaphors to symbolize certain things. ठीक है, वो ये कह रहा है कि and when the sun comes out, when the blessings of Allah will fall upon the earth.
after this rain shall stop. Over here, he is metaphorizing rain with all the problems, with all the calamites that you face in the earth. He is saying, the poet is saying, that when the sunshine will come out, when the blessings will come out, all the problems, all the calamity that you have been facing on the face of earth will disappear. A wondrous light will fill. The blessings of Allah Almighty is going to fill the entire world. And each dark round drop, what the poet is saying, each dark round drop, each problem in your life, each difficulty of your life, each grieving situation of your life will be filled up with that sunlight. He is saying that I hope the sun shines bright. Over here, he is actually hoping and wishing and praying that all this poverty, all this status discrimination, status difference will disappear one day, will end up one day, and it is going to be a lovely sight for the people, for everybody to enjoy without the discrimination of race or color or money. ठीक है? Without status discrimination. Everybody is going to enjoy the benefits, the blessings that Allah Almighty has sent. Everybody is going to enjoy the same luxuries of life that only the rich can do right now. Okay? So this is the paraphrasing exercise B. I move on to exercise C, which asks you to write a summary. अब जितनी मैंने आपको पैराफ्रेजिंग और थीम बता दी है, अगर आप इन दोनों को ही ज्वाइन कर दें तो आपकी समरी हो जाती है. Howsoever, I've written the point plan, और मेरा point plan different colors में है, just to highlight the different paragraphs that you are supposed to have as far as you're writing your summary. सबसे पहली तो वो लाइन जो मैंने आपको कहा है कि रट लो. This poem, The Rain, is written by W.H. Davies, and it is a symbolic poem in which he has symbolizes the leaves on the topmost branch of the tree as the rich class of the society and the leaves on the lowest branch of the tree as the poor class of the society. Along with that, he has symbolizes the sunlight as the blessing of Allah Almighty, which might fall upon the public, upon the world one day, and all this discrimination will end up. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया जो मैंने अभी आपको दिया है. ठीक है, ये मैंने आपको लिखा है रेफरेंस मैंने आपको दे दिया. सिंबॉलिक पोयम की डेफिनेशन दे दी. सेकंड पैराग्राफ आपका बताएगा इमेजरी यूज्ड इन द पोएम. The poet has used beautiful words to describe the time when the rain is falling on the leaves and the sound that the raindrop has created as soon as it touches the leaf's surface. To the poet, the sound resembles the sound of gulping water. It seemed as if the dry, parched leaves of the plant are drinking water to quench their thirst. They are accepting, or they are drinking all the benefits, all the blessings that are being provided to the world. And over here, the inequality that prevails in the society is beautifully described by the poem by saying that the rich gets all the best things in the world and the poor gets all the remaining ones, the filtered out ones. After this, you can add the sentence that the rhyming scheme in the last lines increase the musical effect in the poem. This is going to be your paragraph 2. You can describe the imagery in such a manner that the sun is shining bright, filling every nook and corner of the plant in general, or the plant in specific, and the entire world in general. The poet says that this blessing is going to eradicate the discrimination that is prevailing in the society as far as social status is concerned.
ठीक है, ये सब आप इमेजरीज में ऐड कर सकते हो. ये भी लिख सकते हो कि द पोएट हैज compared all the problems, difficulties, hurdles of life as each dark round spot. ठीक है, and he is saying that this sunlight is going to eradicate all the problems that are ever present in this world. The delight of the poet in hearing the sights and sounds of the leaves bringing water. Over here, you are going to describe what the poet is feeling, his expression, his anticipation, his delight, his content that he is basically absorbing from the scene, from the natural scene which he is describing in his poem. And this poem ends with an optimistic note. The poet has ended this poem optimistically, saying that one day all these problems of life is going to evaporate, is going to disappear, and the sunlight of blessings is going to fill up the entire world. ये आपका C भी हो गया, summary भी हो गया. Point plan is on the board and I have given you verbally the entire summary multiple times, है ना. चलो अब writing skills का last question रहता है, वो भी कर ले. जी बेटा, राइटिंग स्किल्स का लास्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने रेनी डे के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है विच इज नॉट मोर देन 150 to 200 वर्ड्स. नो, 125 to 150 वर्ड्स. पैराग्राफ राइटिंग, अगर आपको मेरा पैराग्राफ राइटिंग वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसका एक टॉपिक सेंटेंस डिसाइड करते हैं और वो पैराग्राफ इज गोइंग टू रिलेट टू द स्पेसिफिक टॉपिक सेंटेंस जो हमने उसको सिलेक्ट किया था या चूज किया था. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वांट टू डिस्कस द रूब्रिक ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू बी मार्क्ड एज फार एज योर पैराग्राफ राइटिंग इज कंसर्न. आपका जो कंटेंट होता है उसके 2.5% मार्क्स होते हैं. इसी तरह आपके पॉइंट ऑफ व्यू के 1.5 मार्क्स होते हैं. यानी कि आपका कंटेंट और व्यू पॉइंट ये दोनों मिलके एड अप होते हैं 2 and 1 3 and 0.5 4 40% ऑफ योर क्रिएटिव राइटिंग. यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका कंटेंट वो मिलके आपकी क्रिएटिव राइटिंग की 40% वेटेज लेता है. इसलिए आपने कंटेंट क्या लिखना है इसको आपने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है. इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी, बहुत सोच समझ के अपने कंटेंट को, अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करना है और लिखना है. उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन काउंट करती है 2.5 मार्क्स यानी 2.5%. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि बेटा आप अगर एक स्टोरी को लेके चले हैं या एक कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं तो आप उसको हायरार्की से लेके जाएं. ऐसा ना करें कि आप बीच बीच में से कहाँ से कहानी निकाल लें. ठीक है, यानी कि आप शुरू करें पास्ट से, फ्यूचर में चले जाएं, फिर प्रेजेंट में आ जाएं, फिर एकदम फ्यूचर से होते हुए पास्ट में वापस चले जाएं. अगर आपने इस तरह से रखा तो आपकी ये जो 2.5 या 20% वेटेज है वो लूज हो जाएगी. इसी तरह आपकी एक्यूरेसी और मैकेनिक्स, एक्यूरेसी होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस मिक्सअप करके लिखे हुए कि नहीं, कहीं सिंपल कहीं कंपाउंड, कहीं ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज की हुई हैं कि नहीं की हुई, ये सारी आपकी होती है एक्यूरेसी. ठीक है, और इसकी वेटेज है 20%, 20.5%. एंड आपकी मैकेनिक्स होती है आपकी ग्रामर, सिंटेक्स एरर्स, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स और टेंसेस की एरर, और ये मिलके आपकी बन जाती है 30% वेटेज ऑफ योर टोटल पेपर. तो आपका 30% वेटेज सिंपली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज किए हैं कि नहीं, योर क्रिएटिव राइटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस और नॉट, और ये कि कोई स्पेलिंग एरर्स या कोई सिंटेक्स ग्रामर एरर्स मौजूद हैं कि नहीं. तो अपनी क्रिएटिव राइटिंग को बहुत ज़्यादा प्लान्ड और स्ट्रीमलाइन करके लिखना, उसमें कोई लूप होल नहीं लिखना. अगर आपने अपनी मैकेनिक्स को, अपनी एक्यूरेसी को और अपने कंटेंट व्यू पॉइंट को क्लियर रख लिया बच्चे, तो ऑर्डर तो खुद ब खुद आ ही जाएगा, है ना. तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल सकते हैं. अब यहाँ पर मैंने आपको एक कोट लिख दिया है. ये कोट आप अपने, ये कोट जो है आपका, ये आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग
या पैराग्राफ राइटिंग के लिए बिगिनिंग में यूज कर सकते हैं. कैसे? नेचर लाइक मैन समटाइम्स वीप्स फॉर ग्लैडनेस, वेक्स्ड सोल्जर कर्स द रेन फॉर विच पुअर शेफर्ड्स प्रे इन वेन. ठीक है, नेचर जो है इंसानों की तरह खुशी में भी कभी कभी रो देती है. बारिश जो होती है, अगर किसी फार्मर की दुआ पे हो रही है कि अल्लाह बारिश हो जाए, मेरी फसलों को पानी मिल जाए ताकि मेरी फसल अच्छी हो जाए, तो बादल खुशी में रोते हैं. ठीक है, और अगर कोई गरीब इंसान अपनी कच्चे मकान में खड़ा रो रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि बारिश ना हो मेरा घर बह जाएगा, तो नेचर उसके गम में रो रही होती है, बारिश उसके गम में बरस रही होती है. ठीक है, वो कह रहे कि नेचर इंसान की तरह कभी कभी खुशी में रो पड़ती है. जैसे जो पुरान परेशान सिपाही हैं, सेलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो कहते हैं बारिश ना हो हमारा रास्ता मुश्किल हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी. वो रोते हैं कि खुदारा बारिश ना हो. ठीक है, जबकि जो आपके फार्मर्स होते हैं, जो मैदानी इलाके में रहते हैं जहाँ बारिश कम होती है, बॉर्डर्स पे बारिश ज़्यादा होती है, समंदर के किनारे, इवेपोरेशन साइंस का सारा आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा. ठीक है, और वो इन वेन यानी यूजलेस होता है उनका रो रो के दुआ करना के रब्बुल आलमीन बारिश भेज दें. ठीक है, तो बारिश कभी भी कहीं भी रब की रहमतें हो जाती है. अब आपने लिखना है द रेनी डे. ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपका वोकैबुलरी है. ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको यूं लिखेंगे, रेनी डे. ठीक है, आप लिखेंगे लास्ट जुलाई इन द मानसून वेदर, लास्ट जुलाई इन द मानसून वेदर. Everybody was gasping with the heat. Everywhere was excessive heat. The temperature had grown alarmingly high. ठीक है, the temperature had grown alarmingly high and people were dying with heat stroke and the death rate has increased. When came a breath of fresh air, and people sighed with relief as the meteorological department predicted heavy rainfall the next day. The sun was shining bright. You can even give the date that it was July 8. The sun was shining bright, but there was a rustling wind outside, and everybody was cursing the time when they believed the information of the meteorological department that it's going to rain heavily the next day. But what happened is the rain started to fall, the clouds started to fill up the day, or the clouds started to fill up the sky during the afternoon. And by mid-afternoon, there was darkness everywhere because the entire sky was filled with clouds. And finally, a few drops of rain fell on the ground, on the earth, and people started to take deep breaths of relief. And thus, within a few minutes, within a few seconds, it started to rainfall heavily. Everybody sighed in relief, everybody relaxed, and the temperature dropped to a certain level, and the problems, the death roll, they have been controlled after the rainfall. The temperature became controlled. I can never forget that specific day because the temperature in Lahore had crossed the record. It was so hot in Lahore, and after that heavy shower of rain, we were all filled with content. We were all filled with bliss. ठीक है? This is going to be a creative writing on a rainy day.
Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did A, B, C, D questions of the writing skills of Unit 5, the poem Rain. We did the paraphrasing, we did the theme, we did the summary, and we did the creative writing of paragraph writing on a rainy day. सब रिवाइज कर लो, सब लिख लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इस यूनिट को अच्छे से पक्का प्रिपेयर कर लो ताकि एग्जाम में अगर इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो फुल मार्क्स मिले। अपना बहुत ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो और सबको दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।